पास्टर नवीन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र ब्रूस थॉमसन का परिचय आपसे करवा सकूं। ब्रूस थॉमसन जी को मैं पिछले 32 साल से जानता हूं। 32 साल पहले जब मैं बैंकॉक एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में पादरी था, तो ये मेरे चर्च के में मेंबर थे और मैं मेरे पड़ोसी भी थे। और ब्रूस थॉमसन वे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो उसके हेड थे बैंकॉक एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में, और हमारा तालमेल काफी बैठता था एक दूसरे से, जहां तक कि हम लड़ते झगड़ते भी थे कि और जब भी इनको मेरे घर से खाने की खुशबू आती थी, हम जब भारतीय भोजन बनाते थे इनको खुशबू आती थी, तो इन्होंने एक बार मुझसे कहा कि अब मुझे समझ में आया कि हमारी आदि माता ईवा जो है वो कैसे बहक गई। उसको बहकाने के लिए शैतान ने भारतीय भोजन का इस्तेमाल किया था कि तो फ्रूट का नहीं, भारतीय भोजन का इस्तेमाल किया था, और उसको बहकाने वाले आदमी का नाम पास्टर अरोड़ा था। तो इतना हमारा तालमेल बैठता था, बिल्कुल हम ऊपर नीचे एक दूसरे के मकान के रहते थे। और तकरीबन रोजाना हम लोग सैर करने के लिए जाते थे। और एक बार सैर करने के लिए मैं तैयार था शाम को जाने के लिए, और इन्होंने आने में देर कर दी। 1 घंटा मैं इंतजार करता रहा, लेकिन नहीं आए। तो मैं बहुत गुस्से में था कि मेरा इतना समय खराब हुआ। लेकिन ये उस वक्त अपने बच्चों को सुलाने, बच्चे छोटे थे, बच्चों को सुलाने में लगे थे कि बाइबल कहानी बता करके बच्चों को सुलाते थे। और जब ये नीचे आए तो इन्होंने मेरे को गुस्से में देखा, तो इन्होंने मुझे दंडवत प्रणाम किया उस वक्त कि मुझे माफ कर दीजिए। और दंडवत करने के बाद ऐसे हाथ हिला दिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था कि दंडवत जो था वो मेरा वो खिल्ली उड़ाने वाली बात थी। तो फिर दोनों हम हंस पड़े और एक दूसरे को गले लगा करके फिर घूमने चले गए। तो इतना हमारा दोस्ताना था। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं कि ये पानी का जो उपचार है, पानी के उपचार के में माहिर हैं। और ये लोगों को बताते हैं, पादरी लोगों को खास करके, कि आप अपनी कलीसिया की सेवा कैसे कर सकते हैं, या जैसे आप लोगों को बाहर मिलने जाएं तो जब आप उनकी सेवा करेंगे, उनको उपचार देंगे, जल उपचार कि जल उपचार और शारीरिक उपचार जो है, जो अपने हाथों से उनको दबाएंगे या उनकी मालिश करेंगे, तो इससे आप उनका दिल जीत पाएंगे। तो इसमें ये माहिर है और नए नए तरीके ये अपनाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और इन्होंने एक किताब तो यहाँ थाईलैंड में लिखी थी, मुझे याद है, और उसका थाई में लिखी थी। इन्होंने थाई भाषा इतनी सीख ली थी कि इन्होंने थाई भाषा में वो किताब लिखी थी। उसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। और उसके बावजूद इनकी और वेबसाइट्स भी हैं। And I will ask Mr. Bruce Thompson to share those websites that he has. Okay, please put them on the chat so people can follow those links. They're already up there. They're already on the up chat. There. Okay. I don't see them. That's why I'm asking. Okay. Maybe you put them too early and people who came in late, they won't see them. They're at the beginning of the chat if you came late. Yeah, but those who came just now, because I don't see it. Okay, on the chat. Okay. So I would like you to put them again, once again, to everyone, not only to the It's host. to everyone.
Can anyone else see them? Okay, I see Pastor Barkat Masih has put one of them. Yep. Yeah. Well, that's the main one. That's the main one. Okay. That's the main one. The other two are there as well, but Okay. that's the main one. So, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि मैंने अपने प्यारे दोस्त ब्रूस थॉमसन जी का आपसे परिचय करवाया है और ध्यान से सुनेंगे, खास करके आनंद तोपनो जी के ध्यान से सुने इनकी बातों को। और मोंटू कुमार जी हैं हमारे बीच में, या और कोई हैं जो कि ऐसी सेवा करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, तो वो ध्यान से सुने और ये बातें जो है आप दूसरों को भी सिखाएं। सभी पादरियों को, सभी लोगों को ये बातें सीखना चाहिए, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु की गवाही हैं, और अगर हम गवाही के तौर पे थोड़ा सा मदद करेंगे लोगों को उपचार में, तो वो परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे। ईश्वर की महिमा हो। एंड वी वेलकम मिस्टर ब्रूस थॉमसन to the pulpit. I know in Spicer College when there was a introduction of the speaker, or no, during the opening prayer, the person prayed. He did not say, hide the speaker behind the cross. He said, hide the speaker behind the pulpit. Okay. So we don't want you to hide behind the pulpit, but you hide behind the cross and speak to us. God bless you. Thank you, sir, for introduced Pastor Bruce Thompson. Now our translator, Bihar Region Director, Pastor Anil Lakra, sir. So hearty welcome, sir, Pastor Anil Lakra. So आज का translator है. थैंक यू नवीन सर। और अगर कहीं पर अगर दिक्कत होगा तो डॉक्टर वीरेंद्र अरोरा सर हमें मदद करेंगे। जरूर। And I thank you, Anil, Pastor Anil, for being my translator this morning. Welcome, sir. Okay, so we're ready to go then, are we? The Bible reading this morning I chose because it's a picture of Jesus doing something that is very unusual for his culture, washing people's feet. आज के सुबह में जो बाइबल के अध्ययन जो पढ़ा गया था और यीशु मसीह के विषय में जो कि उनके संस्कृति में जो कुछ जो अनहोनी घटनाएं घट रहा था उसके विषय में था। And I would like to welcome all of you this morning, but I want to ask you a question as I say hello to you, and that is it unusual for people to wash people's feet in India? आज सुबह में हर एक को स्वागत करना चाहता हूं, और क्या इसी तरह से भारत में इसी तरह से लोग करते हैं? Not anymore. Not anymore? Yeah, it used to be, but on special occasions they do that to the Hindus do that to their priests and hermits. Yes. Yeah. Yes. Because in most of the world, and certainly in Thailand and here in Australia, you don't normally wash other people's feet. और थाईलैंड और दूसरे ही देश में कोई देश में इस तरह से लोग करते हैं। And there is a reason why I wanted you to take notice of that this morning, and that was that Jesus washed 12 people's feet, and of those 12, only one refused to follow him.
आज के सुबह में मैं इस पर ध्यान केंद्रित करता हूं कि यीशु मसीह बारों को उनके पैरों को धोने वाला था और उसमें से एक ही जो व्यक्ति था जो कि नकार रहा था। That's a 92% success rate. और कहा जाए कि ये 92% ये सफलता का रेशियो है। All of you are ministers of different sorts. I notice there's one nurse here, but I don't know what you all do, but I assume you work for other people in a religious way. Wouldn't it be great if you had a 92% success rate of the people that you met, that they followed Jesus? हर एक कोई हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं और इस तरह से जब देखते हैं कि 92% हमारा सफलता का जो रेशियो है, तब हम सोचते हैं कि सचमुच में हम सफल हैं। Would you like that? क्या इसको आप लोग पसंद करते हैं? I don't hear any responses, but one of my favorite books is a book by Mrs. White called The Mount of Blessing. Yes. और जो एलन जी वाइट का जो किताब है, जो पहाड़ी उपदेश में जो इन सारे बातों को हम पाते हैं। And on page 137 in the English edition, it says that we could search heaven and earth. We would look everywhere in heaven and earth, and there would be, there is no truth that is more powerful. 137 पृष्ठ में जो कहा गया है कि अगर स्वर्ग और पृथ्वी में ढूंढा जाए तो इससे बढ़कर के कोई सच्चाई नहीं है। There's no truth more powerful than is made manifest or is shown in works of mercy to those who need our sympathy and aid. और इससे बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है जो कि मनुष्य के लिए दया का, करुणा का इस तरह से व्यवहार किया जा सकता है। And she goes on and says that if the people who profess the name of Christ were to practice the principles of the golden rule, that's doing to others as we would want to be done to us. परमेश्वर के जो वचन या भविष्यवाणी का जिस तरह से हमें पालन करना चाहिए और जिस तरह से लोग को ग्रहण करना चाहिए, जिसका कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। That if we did that, there would be the same power that the church had in the time of the apostles. और यही शक्ति जो वही शक्ति है जो कि चेलों के समय में उन्हें दिया गया था। Yeah, would you like the same power that Peter had when he preached and 3,000 were converted? क्या आप भी जो प्रचार करते समय, जो लोगों को बताते समय, क्या वही शक्ति आप पाना चाहते हैं? Or when they blessed the man in the temple, he hadn't walked since he was a child, and he got up and walked. और जिस तरह से उस मंदिर में जिस तरह से यीशु मसीह आशीर्वाद देते हैं कि उठ करके चलो। Yeah. So that's why I'm passionate about teaching people like you who are working with other people how to do simple things to care for other people, because that's a great way to reach them. और इसी तरह से मैं एक साधारण चीज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को सेवा करते हैं, ताकि एक साधारण चीज से लोगों को आप सेवा कर सकते हैं। Okay. Last week the first time I came onto this Zoom meeting, I noticed that there are children here. There are children watching too. बीते सप्ताह मैं पहली बार इस जूम में
आया और जिस समय बच्चों का जो प्रोग्राम था, is fevers and illness in children a problem in the areas where you live? और जहाँ जहाँ पर आप लोग रहते हैं उस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, जब उस तरह से मैंने सुना। Yes. Is that it is a problem? Yeah, it is. Yeah, it's a very common problem. और yeah. Okay, so this morning I thought I would tell you about a very simple way to treat fevers in children, even from babies. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक साधारण चीज पर आप लोगों को बताऊं, छोटे बच्चों को या तो दूध पियो बच्चों के लिए भी मैं इस समय बताऊंगा। बुखार के बारे में। बुखार के बारे में। हाँ जी, जहाँ के बच्चों के छोटे बच्चों का भी बुखार जो है वो कैसे उतार सकते। थैंक यू सर। Okay, these are things that I used on our own children. We had 4 children, 5 children in our house total. And so we use them for them, but it's also things we used in Bangkok Adventist Hospital. और हो सकता है 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे का भी इलाज कर सकते हैं, जिस तरह से बैंकॉक इनके अपने 5 बच्चे हैं जी। ये सर, सॉरी सर, इनके अपने 5 बच्चे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। ओके, 5 बच्चों के विषय में, अपने बच्चे हैं उनके विषय में जिस तरह से किए हैं उनके इलाज में। Okay, so what I want to say this morning is that this is very simple, but it's aimed mainly at the mothers because you know the children the best. ये बहुत ही साधारण है, लेकिन विशेषकर खास करके माताएं के लिए है जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। So for the mothers here, you know when your child is starting to get sick. They're still all right, but there's something different. They must be getting sick. माताएं जानते हैं यहाँ पर जिस तरह से कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनको तकलीफ होता है, वो जानते हैं। They're not sick enough to take to the doctor, but there's something wrong. और यदि वे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि उनके साथ हम क्या है, कुछ गलत है। And maybe they're even too young to tell you if they're sick. They just are acting unusual. और कभी-कभी जवानों के साथ में भी इस तरह से हो सकता है। So the treatment is बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है जब बीमार होते हैं तो माँ को मालूम पड़ जाता है कि कुछ अटपटा हो रहा है। ओके सर, हाँ जी, लेकिन इतने बीमार नहीं है कि उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। आपके पास उनका इलाज जो है वो आप घर पर भी कर सकती। पास्टर वीरेंद्र सर, हेलो। जी, थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ आपको, मैं इंटरप्शन करा। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा सा ये इंग्लिश में ना दिक्कत लगता है। हाँ, इनकी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है ना, उसके लिए। हाँ, इसलिए। Sorry about my accent. No problem, sir. What I want to tell you this morning is not against the medical profession. I always work with people who are with the doctors and the nurses because it's very important that we work with them. मैं चिकित्सकों के और उनकी चिकित्सा के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे गलत ना समझें कि लेकिन उसकी भी हमें जरूरत होती है। So if your child is starting to get sick, you notice they're starting to get sick. अगर आपका बच्चा बीमार होने को है, what you do is you get a basin or some sort of a tub that they can either sit in deep water or they can even lie down in.
एक छोटा सा आप बर्तन लीजिए, या क्या बोलते हैं उसको, बेसन, बेसन को हिंदी में क्या बोलेंगे पास्टर जी, अनिल जी? तसला, पानी का तसला। तसला, तसला। हाँ, तसला। हाँ, एक गहरा तसला लीजिए पानी के लिए, एंड यू उसमें डिड यू से हॉट वाटर? Warm water. वार्म वाटर, उसमें गुनगुना पानी डालिए। It shouldn't be hot. It should be comfortable for them, but it should be warm enough that they like it. ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनका चमड़ा जल जाएगा, लेकिन गुनगुना इतना होना चाहिए कि उसमें उनको आराम मिले। And what you do is you let them lie in it and get warm. उसमें उनको लिटा दीजिए जब तक वो थोड़ा गर्मी महसूस नहीं करते। And then when they've been in there for at least 20 minutes, 15 to 20 minutes, 20 मिनट तक बच्चे को रखिए पानी में, and they're feeling nice and warm, और उनको जब अच्छी तरह से उसका क्या बोलते हैं शरीर गर्म हो चुका है, then you get them to stand up or sit up so their back's out of the water. तब उनको बिठाइए या खड़ा कीजिए पानी में, and you throw about a liter of cold water, the coldest you can get. If you've got ice, you put ice in it, onto their back. और उसके बाद उनकी पीठ के ऊपर ठंडा पानी डालिए, बर्फ वाला ठंडा पानी, 1 लीटर पानी उनके ऊपर डालिए। And so that's the top part of their back and their neck. So it और flows यहाँ down से their back. गर्दन से नीचे तक पानी, वो ठंडा पानी डालिए। Okay. They mightn't like you at that stage. शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा उस वक्त बच्चे को। So you dry them off quickly, then you wrap them up warmly, even if it's hot जल्दी weather. से उनका शरीर पोंछ दीजिए और तौलिए में लपेट लीजिए। And if the treatment works, they usually go to sleep. और अगर आपका इलाज सफल हुआ है तो उनको फिर उसी वक्त नींद आ जाएगी बच्चे को। Now the whole idea is to make them a little bit hot. They should be hot. और यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को गर्मी जो है, शरीर जो है वो काफी गर्म हो जाना चाहिए। Do you have any treatment like that in India? क्या भारत में लोग ऐसा इलाज करते हैं क्या? Do you use water for the children like that? No, usually we take them to the doctors. या Just straight to the doctor. This is and thank you for bringing that up, because if they get worse, if they get sicker and sicker, you should take them to the doctor. तो ये बोलने के लिए बहुत धन्यवाद पास्टर बरकत जी, लेकिन अगर बच्चा बहुत बीमार है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। That's very important, because this treatment doesn't always work, and so the children still need to be seen by the doctor. तो कई बार ये इलाज काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। But very often, especially if you get them early, it will stop it. That's all. They will only need one treatment. लेकिन अगर आप जल्दी से एक्शन ले लेंगे, जैसे कि कुछ अटपटा नजर आ रहा है, तो शायद बच्चा ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मतलब ज्यादा देर मत करें। Now, it might sound unusual that if a child gets a fever, you make them even hotter, but that's actually what the body needs. तो आपको शायद अजीब लगेगा कि बच्चे को बुखार है और ऊपर से उसको गर्म पानी में डाल रहे हैं, लेकिन ये काम करता है ये इलाज। And if you try it, you'll be very happy, because it usually works. लेकिन अगर आपको इसको एक बार आजमाएंगे तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये सचमुच ये इलाज काम करता है। Okay. So does anyone have any questions about that treatment? अभी तक इसके बारे में किसी के पास कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं आप?
तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। This is very simple and we can understand it. I think Okay. there is no question. Okay. Okay. All right. Would you like to learn what to do when you feel like you're getting a fever or getting sick? क्या आप Yes, we जानना want- चाहेंगे आप अपने लिए क्या कर सकते हैं जब आपको कुछ महसूस होता है कि आप ठीक नहीं हैं? yes, we want to learn, sir. Okay. Well, it's a very simple treatment, and although that would be in English, I was going to say you could see it on my website, the one Hydro for COVID, but it's step 2 on that one, but that's in English. That's okay. They can copy and do the Google translation. Oh, okay. Well, it's step 2 on the Hydro for COVID is what you do when you start to feel sick, and you need to do it early. तो ये उस समय के लिए है जब आपको कुछ अटपटा महसूस होता है तो जल्दी से आप ये इलाज अपनाएं। So when I start to feel I'm getting sick, it might be influenza or something, I'm getting a fever. तो जब मुझे महसूस होता है कि मुझे जुकाम लगने वाला है या बुखार हो रहा है, The first thing I do, what I usually do, I have a deep bathtub. I have a hot tub bath, and I make it really hot, not like the children. I make the bath as hot as I can stand. तो मेरे घर में जो एक वो स्नान करने का बाथ टब जिसमें घरों में होता है कि उसमें मैं गर्म पानी भरता हूँ, बच्चों की तरह नहीं, थोड़ा गुनगुना, बहुत गर्म करता हूँ जितना मैं सह सकता हूँ। Now, I stay in there until I'm really sweating. और मैं तब तक वहां उसमें बैठा रहता हूँ गर्म पानी में जब तक कि मुझे बहुत पसीना आता है। And I feel so hot that I really enjoy putting the cold cloth. I get a cloth with ice water on it, and I put it on my head to keep my head cool because I get so hot. और इतना गर्म हो जाता है मेरा शरीर कि मैं एक बर्फ वाला पानी जो है उसको रखता हूँ पास में, उसमें कपड़ा डुबो करके छोटा तौलिया उसको मैं सिर के ऊपर रख लेता हूँ ताकि मेरा सिर ठंडा रहे। And after I'm really starting to sweat, then here in Australia, the water is cold enough that I can get out of the bathtub, or I stand in the bathtub and I run the cold water over myself for only a few seconds. तो जब मेरे को बहुत पसीना आ चुका होता है तो फिर उसके बाद मैं फटाफट से ठंडा पानी जो ऊपर डालता हूँ, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पानी काफी ठंडा होता है, तो शावर का पानी खोलने से मैं उसमें कुछ मिनट तक पानी डालता हूँ ठंडा अपने ऊपर, Especially on the back of my neck again. और खास करके गर्दन के पीछे यहाँ पर। It only has to be maybe 5 seconds, very short. केवल 5 सेकंड ही डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड के लिए ठंडा पानी डालिए ऊपर। Or if the water isn't cold enough or I don't have the shower, I can pour ice water over my back. अगर आपके पास शावर नहीं है और पानी ठंडा नहीं है जैसे कि इंडिया में गर्मियों में हो जाता है, तो आप बर्फ का पानी लीजिए और अपने ऊपर डाल लीजिए पीछे से, यहाँ गर्दन के नीचे, गर्दन और उसके नीचे। Ice water. या बर्फ का पानी। yes. So and then you dry off quickly, and then I go to bed too. और जल्दी से शरीर को पोंछ करके फिर मैं सो जाता हूँ। And if it's during the day, I can, it's not the evening, I will at least cover myself warmly with a blanket for half an hour, even if it's summertime, even if it's hot. तो अगर सोने का समय नहीं है तो फिर भी अगर दिन में मैं ये इलाज करता हूँ तो आधा घंटे के लिए मैं कंबल ओढ़ करके लेट जाऊंगा। So it's similar to what we do for the children. तो इसी तरह से बच्चों के लिए करना है। Now, I have to give you a big warning though. लेकिन एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ इसके साथ। And that is, I have a video of myself doing that on that website on Hydro for COVID.
तो जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया है उसमें आपको एक वीडियो दिखाई पड़ेगा इस इलाज का। And so you better be prepared to see me in my underwear. तो आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब आप मेरे को अंडरवेयर में केवल देखेंगे, क्योंकि मैं नहा रहा हूँ। Sorry about that, but that will उसके show लिए you मैं how to क्षमा do it. चाहता हूँ। All right. The other thing, but there is a warning. If I don't get better, if I don't feel better, I should still go and see the doctor. लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं महसूस करता हूँ तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। But if I do feel better after it, what I do is 2 more days. With the children, once is often enough, but with adults, you need 3 days. You do it once a day for 3 days. तो आप इस इलाज को 3 दिन तक दोहरा सकते हैं, दिन में एक बार, लेकिन 3 दिन तक। So it's always you get hot till you sweat, and then you quick cold, and then rest for at least half an hour, covered nice and warmly. तो आप गर्म पानी में 20 मिनट तक अपने आप को रखना है आपने, और उसके बाद ठंडा पानी डालना है और उसको जल्दी से पोंछ करके फिर आप कंबल ओढ़ करके लेट जाइए। अगर गर्मी भी है तब भी आप कंबल लेट करके ओढ़ करके लेट जाइए। The other thing about this is don't take any medicine that makes your temperature go down, things like Panadol or aspirin. आपने कोई ऐसी दवा नहीं लेनी है जो कि आपके बुखार को कम कर देगी, जैसे कि पेनाडोल या एस्पिरिन। In India, they take something else. What is that? डॉक्टर पास्टर बरकत, इंडिया में क्या लेते हैं बुखार के लिए? पैरासीटामोल। Paracetamol, yeah. वो दवाई नहीं लेनी है बुखार को कम करने के लिए। Because this is much better at relieving the symptoms than the paracetamol. लेकिन ये इलाज जो आपको बताया ये उससे कई गुना बेहतर है। So if you feel better after the first treatment, keep going for 2 more days. अगर आपको पहला इलाज करने के बाद, उपचार करने के बाद थोड़ी राहत महसूस होती है तो फिर 2 दिन और कीजिए। Now it doesn't matter what the fever is. कोई कैसा भी बुखार क्यों ना हो। In Thailand, we used it to treat dengue fever. थाईलैंड में हम इसका ये इलाज जो है डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए भी करते थे। And malaria. मलेरिया, हाँ जी, yes. And try it for any fever. I have had reports even from people in India of using it for COVID. तो यहाँ तक कि इंडिया में लोग कोविड के लिए भी इस इलाज का इस्तेमाल को आजमा रहे हैं। And what it will do in COVID is it will stop you going to hospital. अगर कोविड हो गया है तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा अगर आप ये उपचार करेंगे तो। Because what it does is it turns the immune system up. इससे क्या होगा कि आपका क्या बोलते हैं, रोग निरोधक शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। पास्टर जी ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है। रोग प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक। हाँ, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो मजबूत हो जाएगी। साधारण शब्दों में कह सकते हैं बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। हाँ जी, थैंक यू जी। So it's a very simple but powerful treatment, and you don't need to do it in a bathtub either. तो ये इलाज जो है वो बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या बोलते हैं, असरदार है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बाथटब हो, क्योंकि सभी घरों में बाथटब उपलब्ध नहीं होते हैं। So in Thailand we used the steam bath where we heated people up with steam. So थाईलैंड में हम लोग स्टीम बाथ का उपयोग करते थे। And the कमरे को स्टीम से भर देते हैं।
भाप भाप जो है पानी की, उस भाप के पानी से कमरे को भर देते हैं। But you don't even need that. In the refugees in Thailand, they wrap themselves up in the black plastic that they use for building, the polythene plastic. और थाईलैंड में तो लोग अपने आप को एक प्लास्टिक बैग में प्लास्टिक बैग जो बड़े बड़े होते हैं उसमें घुस जाते थे, काला काला प्लास्टिक बैग, काले रंग। Plastic bag? No, big sheets of plastic. They wrap themselves up and lay in the sunshine. Oh, not plastic bag. Okay. What did you say again? The polythene plastic they use in building. I'm not sure. Okay. In Australia, we use बड़ा it. बड़ा जो प्लास्टिक का कपड़ा होता है, बैग नहीं सॉरी, उसको कपड़े में अपने आप को लपेट लेते थे और फिर सूरज की रोशनी में बैठते थे। So it's big sheets of plastic and it's black. And so when they lay in the sun, they got hot very quickly. तो काले रंग का प्लास्टिक जो है उसमें अपने आप को लपेट लेते थे, क्योंकि ये शरणार्थी शिविर जो है उसमें जब लोगों का इलाज करते थे तो ऐसे करते थे, क्योंकि उनके पास तो ना ज्यादा पानी होता था ना बाथटब, तो इसीलिए उनको प्लास्टिक, काला प्लास्टिक में लपेट करके सूरज की रोशनी में उनको थोड़ी देर तपा देते थे। And I have friends in Australia who, when they need to sweat, they go and they've got a small shed in the garden where they keep their garden equipment that gets very hot in the sun, and they go and sit in there. तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई जान पहचान के लोग हैं जो खेत में चले जाते हैं जहाँ के खेती करने के औजार होते हैं और वहां पर बहुत गर्मी होती है, तो वहां जाकर के उसमें बैठ जाते हैं। I have other friends who get wrapped in blankets that are dark colors, brown blankets, and they sit in the sunshine, and that makes them sweat. और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि गहरे रंग के या काला रंग का जो कंबल होता है उसमें अपने आप को लपेट करके सूरज की रोशनी में बैठ जाते हैं। So it doesn't matter how you make yourself hot. तो इसका ये आवश्यक नहीं है कि किस तरह से आप अपने आप के शरीर को गर्म करते हैं, लेकिन आवश्यक बात यह है कि आपने अपने शरीर को गर्म करना है, तपाना है थोड़ा। Except don't exercise to make yourself sweat, because you can damage your heart. If you have a virus infection and you exercise, you can damage your heart. लेकिन अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन है और आप व्यायाम करने के लिए निकलें या दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए निकलेंगे, तो आपके दिल के ऊपर असर पड़ सकता है, दिल को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को गर्म करने के लिए या पसीना लाने के लिए एक्सरसाइज मत कीजिए जब आप बीमार हैं। And while it's happening, you should aim at about 20 minutes, but during that time, the 20 minutes, you should keep your head cool. So some cool cloth for your head. तो किसी तरह पे आप अपने आप को, शरीर को गर्म करते हैं, लेकिन अपने सिर को आपने ठंडा रखना है और सिर के ऊपर बर्फ का कपड़ा जो है बर्फ के पानी में डुबो करके सिर पर रखते रहिए ताकि आपका सिर ठंडा रहे। And you should always finish with some sort of cold, very quick cold. लेकिन उसके बाद अपने 20 मिनट के बाद अपने आप पर वो ठंडा पानी जो है गर्दन से नीचे तक डाल लीजिए। And then rest for at least half an hour, dress over warm. Better to go to bed and go to sleep. और आधा घंटा आराम कीजिए अपने आप को कंबल में लपेट करके, गर्मी में क्यों ना हो। That's the treatment for adults, and the earlier you do it, the better. ये तो है वयस्कों के लिए, ये इलाज है उपचार जो अभी बताया है। Okay, any questions? अभी कोई प्रश्न है किसी के मन में? अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, और फिर भी अगर होगा तो we can ask after the prayer. Pardon? We can ask after prayer. Okay. After the closing prayer, then people have the opportunity to ask questions. All right. Yeah. Thank you. And I do ask that you would try it on your neighbors and friends, and certainly on your family, because this is a very powerful doctrine.
तो ये जो इलाज है ये बहुत ही शक्तिशाली इलाज है। तो आप अपने आप पर ही मत आजमाइए, दूसरों के ऊपर भी आजमा सकते हैं, पड़ोसियों के साथ, फैमिली और आपके परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। Thank you for translating.